Okay, so today we will start with the structure of cell. Okay, so basically let's start with structure of cell. So a proper, completely matured cell will have three parts. The first one is the outermost cell wall. Okay. Then we have the protoplasm. So what does protoplasm contain? Can you tell me? Different matter, such as cytoplasm and all. What does a protoplasm consist of? The cell membrane and It contains cytoplasm, cell membrane, nucleus. cytoplasm and nucleus. Okay, it contains cytoplasm and nucleus. Then we have vacuoles. Okay, so these are the main three parts of a cell, of a matured cell. Okay, so now I will show you a flow chart which represents like different layers or different parts of a cell in depth. So here we'll start with the cell. Okay, a cell contains cell wall, cell and envelope. Okay, and protoplasm. Okay, so this is the outermost layer of the cell envelope, and within the cell envelope you have the protoplasm. Okay, so now cell envelope can be divided into two. It will have a cell wall and a plasma membrane. Okay, plasma membrane. Plasma membrane is also known as cell membrane. Okay? And here in protoplasm can be divided into two sections. One is cytoplasm and the other one is nucleus. And again, cytoplasm can be divided into three sections. First one is cytosol. Cytosol contains the matrix or the liquid jelly portion of the cytoplasm. Okay, cytosol is the jelly portion of the cytoplasm. Apart from that liquid portion, it contains different ions and proteins. Okay, then we have organelles, cell organelles. So cell organelles are nothing but they are subcellular structures that are found in the cytoplasm, which behave like individual organs in an like हमारे body में जैसे अलग-अलग organs होते हैं which have a specific function, वैसे ही organelles are there in the cell, and each organelle will have a particular role to play. So there are many different organelles present in the cell. Some of them are Golgi apparatus. Okay, then we have mitochondria. Then we have ribosome. Then we have endoplasmic reticulum. Then lysosomes. Okay, so then the third portion of the cytoplasm is inclusions, cell inclusions. Okay, now nucleus again ये further divide होता है दो sections में. First one is nuclear membrane. Good morning, Nayan. Nuclear membrane. Then we have nucleoplasm. Then we have chromatin or DNA. Then we have RNA and certain proteins. Okay, so this is ये सारे चीजें होते हैं एक सेल के अंदर. ओके, तो नाउ फर्स्ट व्हाट वी विल डू इज पूरा मिक्सचर मतलब मिक्सअप करने के बजाय व्हाट वी विल डू इज फर्स्ट वी विल फोकस ऑन प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या होता है. ओके, so you can take notes if you want. Structure of cell, please take notes. Structure of cell. A mature cell has following three parts. First one is cell wall. Second one is protoplasm, which consists of cytoplasm and nucleus. And third one is vacuole. VACUOLE. CUOOLE. Okay, then you can draw this flow chart. If you do not understand like what I've written, you can just ask me. I'll spell it out for you. So the cell is divided into two sections: cell envelope and protoplasm. Protoplasm. And the cell wall can be further divided into cell wall,
cell envelope can be divided into cell wall and plasma membrane. Protoplasm is divided into cytoplasm and nucleus. The nucleus has nuclear membrane and nucleoplasm. Nuclear membrane is the membrane that covers the nucleus, and nucleoplasm is something similar to the cytoplasm, okay, which is found within the nucleus. Then we have chromatin or DNA, then RNA and proteins. And cytoplasm, 3 sections हैं उसके. Cytosol, which forms the matrix or the jelly part of the cytoplasm. Apart from that, it has ions and proteins. Then there are different cell organelles embedded in the cytoplasm of the cell. Some of them are mitochondria, ribosome, endoplasmic reticulum, lysosomes, etc. Then third one is cell inclusions. Cell inclusions are like nothing but they are like you can call it as reservoirs. Okay, cell reservoirs that stores food. Okay, that store food in the cell. Is it done? 9, is everything clear to you? Can somebody respond? Obipra, any doubt? No, ma'am. Explain the last part again, please. Sorry? Can you explain the last part again, please? I kind of missed the last. Last part, you mean the cell inclusion? Starting from cytosol, ma'am. Starting from cytosol. Okay. So the cytoplasm, it contains 3 parts. The first one is cytosol. So cytosol, it forms the gel-like portion of the cytoplasm. Okay. So it contains ions and proteins. Okay. So the next one is organelles. These are nothing but some subcellular structures which are present in the cytoplasm, and they are like similar to organs in our body. So each organ has a different function, right? तो वैसे ही सेल के अंदर ये सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनका अलग अलग रोल प्ले करने के लिए होता है. ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी लाइक यू नो ये है पावर हाउस ऑफ द सेल. ओके, इट प्रोड्यूसेस एनर्जी. राइबोसोम जो होता है, इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ आरएनए. सॉरी, नॉट आरएनए, सॉरी, प्रोटीन. आरएनए को कन्वर्ट करके प्रोटीन बनाता है. So like that, every organelle has their own function to play. Third one is cell inclusion. Cell inclusions are like reservoirs, okay, which store food for the cell. मतलब जो excess में जो बनता है, they are stored away. Okay, तो वो वो जो food होते हैं, वो they are stored in the cell inclusions. Okay, then you have the protoplasm is divided into cytoplasm and nucleus. तो nucleus के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, देन यू हैव क्रोमैटिन और डीएनए, देन आरएनए एंड प्रोटीन. सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स. ओके, इज एवरीथिंग क्लियर नाउ? Yes, ma'am. एनी डाउट? ओबिप्रा, डू यू हैव एनी डाउट? No, ma'am. तो अगला है प्रोकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स, like we discussed yesterday, they are represented by bacteria, right? Then we have blue-green algae like cyanobacteria वगैरह. ठीक है, blue-green algae होते हैं. Then we have mycoplasm. फिर PPLO, short for pneumonia like organism. Okay, तो जनरली ये प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, दे आर जनरली स्मॉलर एंड दे मल्टीप्लाई फास्टर कंपेयर टू द यूकैरियोट्स. ठीक है, दे आर स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई फास्टर कंपेयर टू द यूकैरियोट्स. दिस इज वन ऑफ द. फिर दे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज. शेप एंड साइज भी बहुत वेरी करता है. फॉर एग्जाम्पल, द 4 बेसिक shapes of bacteria जो होते हैं, they are bacillus, which is rod like. Okay, then we have coccus, which is spherical. bacillus जो होता है वो rod like होता है, मतलब ऐसे लंबे लंबे ऐसे होते हैं. ठीक है, और coccus जो होता है वो spherical होता है. then we have vibrio जो coma shape होता है, coma shape. then we have pyrillum जो एकदम spiral जैसा होता है. Okay, is it visible? ये जो शेयर किया है मैंने. सो हियर यू कैन सी वी हैव स्फेरिकल कोकाई जो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं. वी हैव स्ट्रेप्टोकोकस जो 2 सेल के बने हुए हैं, मतलब 2 स्फेरिकल या कोकाई शेप के हैं. ठीक है, then we have rod shaped bacilli. Example is Bacillus anthracis, which causes anthrax. तो ये bacillus हैं जो rod shape के होते हैं.
Then we have spiral shape. Here we have Vibrio cholerae, जो Vibrio cause करता है. Sorry, cholera cause करता है. Then here we have Treponema pallidum, जो spiral shape के हैं. Okay, so these are some of the examples. These are the different shapes of bacteria present in prokaryotes. Then even though they have like different like structures and size, but fundamentally इनका जो फंक्शन होता है वो सब सिमिलर ही होता है. ओके, नाउ यहाँ पे another important thing is prokaryotes में cell wall होता है. They have cell wall except mycoplasma. Okay, except this they have cell wall, and like I discussed yesterday, they do not have any nucleus. और genetic material जो होता है वो like I said yesterday, वो एकदम like they are naked, they are not covered by any membrane. Okay, and apart from this genetic material, apart from this the main genetic material, इनके पास एक और होता है circular DNA, small circular DNA, which is found in other parts of the cytoplasm. ऐसे ही embedded आपको मिलेंगे, which is called as plasmid. Okay, so usually we call it as the main DNA of any organism is called as genomic DNA. Okay, genomic DNA. तो genomic DNA के अलावा प्रोकैरियोट्स में होते हैं plasmids. Plasmids are nothing but small circular DNA present in the cytoplasm. So उसके बाद next point is they do not have any organelles. No organelles. मतलब I have मतलब इस flow chart में I told you that the cytoplasm contains different organelles. So ये जो होता है ये eukaryotes में होता है. But in prokaryotes there are no organelles except riboplasm, ribosome, and also they have cell inclusions. Okay, so you can take notes. Prokaryotic cells are represented by bacteria, blue-green algae, mycoplasma, and PPLO, pleuropneumonia-like organism. Next point, they are generally smaller and multiply faster than eukaryotes. Prokaryotic cells vary greatly in shape and size. हो गया? Any doubt so far? Okay. Next point is four basic shapes of bacteria. First one is bacillus. BACILLUS. Bracket में लिखो rod-like. ROD. Rod-like. Second one is coccus. COCCUS. Coccus is spherical in shape. Then we have vibrio, that is comma shape. Then we have finally spirillum, जो कि spiral shape का होता है. SPIRAL, spiral shape का होता है. Okay. Next point is they have cell wall surrounding the cell membrane. Except mycoplasma. Prokaryotic cells have no well-defined nucleus. Next point is genetic material is basically naked. Genetic material, or you can say genomic DNA, is basically naked, comma, not covered by nuclear membrane. In addition to genomic DNA, genomic DNA, many bacteria have small circular DNA called plasmid. So these plasmids, they provide different characteristics to these bacteria. For example, we say, right, bacteria, some of these XYZ bacteria are resistant to some antibiotic. तो वो जो होता है वो plasmid के कारण होता है. अगर plasmid में वो sections हैं which can resist a particular antibiotic, तो वो ओवरऑल वो बैक्टीरिया जो है उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंट होता है. ओके, तो वो है प्लाज्म. ये हो गया पॉइंट लिखिए. इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, मेनी बैक्टीरिया हैव small circular DNA called plasmid. Next point is prokaryotes have no organelles. Except
ribosome except ribosome. And the last point is they have cell inclusions. Cell inclusions. INCLUSIONS. Cell inclusions. Okay. Now we'll have a look at the prokaryotic cell. ये है एक prokaryotic cell. So here you can see the outermost layer. Outermost layer जो है वो cell wall है. Cell wall के आगे भी एक और है capsule, जो कि मैं आपको बताऊंगी अभी आगे ये capsule होता क्या है. तो we have capsule, we have cell wall. उसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. ओके, इनके अंदर होता है हमारा प्रोटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस. तो ये हमारा हो गया साइटोप्लाज्म. ओके, तो ये हो गया साइटोप्लाज्म. फिर हियर यू कैन सी राइबोसोम्स विच आर लाइक ग्रैन्यूल्स, विच आर लाइक ग्रैन्यूल्स स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म. तो ये है हमारा न्यूक्लियोइड, यानी कि और जीनोमिक डीएनए. So this is the plasmid that we discussed in the end. So they are the small circular DNA. Okay, ऐसे बहुत सारे कॉपीज होते हैं. एक कॉपी नहीं होता है एक सेल में बहुत सारे कॉपीज होते हैं प्लाज्मिड. Then we have inclusion. I said inclusions are reservoirs that store food. Okay, here we have flagellum and phyllis which help in the mobility of the cell. Okay, वो भी हम डिस्कस करेंगे. So next, is it clear? किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट? मैसेज तो कर दो एटलीस्ट. अनम्यूट नहीं कर रहे तो एटलीस्ट मैसेज करके तो बता दो. ओके, ठीक है. आई थिंक बाकी सब चलेगा. वो भी प्रद, आर यू देयर? सेल वॉल इज मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ. आई विल डिस्कस इट. मैं अभी बताऊंगी. विल डिस्कस दैट नाउ. तो सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, अगला टॉपिक है सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस. अब कंपेयर टू यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक का जो सेल एनवेलप होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है. ओके, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है. एंड ये जो सेल एनवेलप है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. पहला है आउटरमोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स. ओके, सेकंड वन इज सेल वॉल एंड द थर्ड वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, सो दीज आर द 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेल एनवेलप. ग्लाइकोकैलिक्स, which is the outermost layer of the cell envelope. Then we have cell wall and plasma membrane. Or based on the difference in this cell envelope and staining procedure. यूजुअली हम माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया को जब चेक करना होता है तो वो आप ऐसे डाल के आपको दिखेगा नहीं, या फिर आपको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करने तो वी यूज सम स्टेनिंग प्रोसीजर. तो इसके लिए हम एक स्टेन यूज करते हैं. वो है बहुत अलग अलग टाइप के स्टेन्स होते हैं. तो एक स्टेन उसमें जो है वो है ग्राम स्टेन. तो बेस्ड ऑन द ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर एंड डिफरेंसेस इन द सेल एनवेलप, बैक्टीरिया को अगेन 2 सेक्शंस में डिवाइड किया जा सकता है. एक है ग्राम पॉजिटिव और दूसरा है ग्राम नेगेटिव. ओके, तो ये जो ग्राम पॉजिटिव होता है, दे कैन टेक अप दिस ग्राम स्टेनिंग. ग्राम स्टेन जो होता है वो ग्राम स्टेन, बट ग्राम नेगेटिव जो होता है डू नॉट टेक दिस. ठीक है, तो अगर जो स्टेन हम यूज करें वो अगर वो एब्जॉर्ब हो रहा है एब्जॉर्ब होके वो अगर हमें वो उसका कलर दिख रहा है तो दैट इज योर ग्राम पॉजिटिव. अगर नहीं दिख रहा है, अगर स्टेन नहीं लिया गया है, then it becomes the gram negative. Okay, so this is based on the staining procedure and the difference in the cell envelope. Okay, so let's see what is glycocalyx. So as I said before, glycocalyx is the outermost section of the cell envelope. It again it can differ in composition and thickness. Okay, so if it is loose and like loose sheet की तरह है, if it is loose sheet, then it is called as slime layer. मतलब एकदम slimy layer होता है तो उसको slime layer बोलते हैं. वो नहीं है. If it is not like that, if it is thick and tough, then we call it as कैप्सूल. ओके, तो वही कैप्सूल हमने यहाँ पे देखा था. तो ये है हमारा कैप्सूल. ये कैप्सूल जो होता है वो बहुत टफ होता है, थिकर भी होता है, टफर भी होता है. ओके, नेक्स्ट इज सेल वॉल. सेल वॉल जो होता है, इट डिटरमाइंस शेप ऑफ द सेल. इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट. मतलब ये इट प्रिवेंट्स फ्रॉम
like bursting or collapsing of the cell. Okay, prevents bursting or collapsing of the cell. Okay. अगला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. So प्लाज्मा मेम्ब्रेन it is selectively permeable. Selectively permeable. Permeable का मतलब क्या है? Anybody? What do you mean by permeable? Act as a door. Okay, yeah. It allows the free movement of gas or liquid. हाँ, तो वो सेलेक्टिवली परमेबल मतलब ये सबको अंदर आने नहीं देता है, सिलेक्टेड चीजों को ही आने जाने देता है. तो इसीलिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल इन नेचर. ठीक है. नेक्स्ट वन इज इट इंटरेक्ट्स विद आउटसाइड वर्ल्ड. इट इंटरेक्ट्स with outside world and they are these are like basically similar to eukaryotes. Okay, मैं ये prokaryotic cell का मैं ज्यादा in depth नहीं जाऊंगी. ये थोड़ा हम मतलब हल्के से ही कवर करेंगे. हम मेन पोर्शन जो होता है वो यूकैरियोटिक्स में ही आता है, तो आई विल नॉट वेस्ट मोर टाइम ऑन प्रोकैरियोट्स. ओके. Next is mesosomes. Mesosomes. So these are membranous structure formed by invagination of plasma membrane. Okay, invagination का मतलब है folding inside. Okay, तो क्या होता है कि ये हमारा सेल है, ये हो गया सेल वॉल, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन. कभी कभार क्या होता है ये अंदर की तरफ ऐसे मुड़ जाता है. ठीक है, अंदर की तरफ ऐसे मुड़ जाता है, तो ये बन गया हमारा मीजोसोम्स. ओके, तो ये मीजोसोम जो है these are the they help in the cell wall formation. Okay, they help in the cell wall formation. Okay, then DNA replication और के टाइम पे भी ये काम आता है. DNA replication and distribution to daughter cell. Okay, next is they are also needed for respiration. फिर कुछ चीज अगर secrete करना है, secretion process. And apart from all of this, it increases the surface area. Surface area मतलब देखो, अगर ये चीज नहीं होता यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा सरफेस एरिया जो है कम होता. ये इनवर्ड फोल्डिंग के कारण जो है कांटेक्ट एरिया जो है वो बढ़ जाता है. ठीक है, तो ये जो दीज एक्सटेंशंस दे can be in the form of vesicles. It can be in the form of tubules. Vesicles मतलब गोल गोल जैसे हो सकते हैं, या फिर ट्यूब्यूल फॉर्म में हो सकता है. ट्यूब्यूल्स मतलब ट्यूब जैसे फॉर्म में हो सकता है. और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लेमेले मतलब प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं. ओके, तो लेट्स नोट्स ले लीजिए आप एक बार. कोई डाउट है? एनी डाउट सो फार? सबको सब कुछ समझ में आ गया या फिर कोई डाउट है? ओके, तो नोट्स ले लीजिए. सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन. पहला पॉइंट है मोस्ट प्रोकैरियोट्स particularly bacterial cells have chemically complex cell envelope. Most prokaryotes, particularly bacterial cells, have chemically complex cell envelope. Next point, cell envelope consists of outermost glycocalyx, GLYCOCALYX, outermost glycocalyx. Second one cell wall, and third one plasma membrane. Cell envelope consists of outermost glycocalyx, cell wall and plasma membrane. तो ये तीनों का ना different functions होते हैं, but together they protect the cell. Okay, next point is bacteria can be classified based on the differences in cell envelope and manner in which they respond to staining procedure. तो उसमें दो डिविजन्स हैं, एक है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. ओके, सो ग्राम पॉजिटिव दे टेक अप ग्राम स्टेन एंड ग्राम नेगेटिव डू नॉट टेक gram stain. Okay, सबका लिख के हो गया. Shall I move on to the next point? Okay, next point is glycocalyx. Glycocalyx differ in composition and thickness. पहला point है differ in composition and thickness. Next point, it could be loose sheet called
slime layer, or it could be thick and tough, or it could be thick and tough called capsule. Okay, अगला है सेल वॉल. तो अगर ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो अगर बहुत लूज है तो वो बन गया हमारा स्लाइम लेयर, और अगर बहुत टफ है, हार्ड है, थिक है तो वो बन गया हमारा कैप्सूल. अगला है सेल वॉल. सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल. Cell wall determines the shape of the cell. It provides structural support. It provides structural support by preventing the cell from bursting or collapsing. By preventing the cell from bursting or collapsing. Okay. Next is plasma membrane. Plasma membrane is selectively permeable in nature. Plasma membrane is selectively permeable in nature. It interacts with the outside world. And are structurally similar to that of eukaryotes. Structurally similar to that of eukaryotes. अगला है mesosome. So mesosomes, they are special membranous structures formed by the invagination. Special membranous structures formed by the invagination. INVAGINATION. Invagination of plasma membrane. Invagination का मतलब है folding inward. These extensions are in the form of vesicles, tubules and lamellae. LAMELLAE, जो कि plate like structures होते हैं. Okay. अगला point है, they help in cell wall formation. They help in DNA replication and distribution to daughter cells. DNA का replication का मतलब क्या है? Forming copies of DNA. Okay, तो DNA replication and distribution to daughter cells. फिर है other points are like they help in respiration, secretion process, and also increases surface area. They help in respiration, secretion process and increase surface area. तो ये हो गया हमारा mesosome. Hello, ma'am. Can you go through the first point of mesosomes again? Mesosomes के first point. Okay. First 2 points. Yeah. I said that mesosomes are special membranous structures formed by the invagination of प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मतलब ये जो सेल मेम्ब्रेन जो होता है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, दे समटाइम्स फोल्ड इनवर्ड, अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म की तरफ फोल्ड होते हैं. सो ये फोल्डेड स्ट्रक्चर्स को हम मीजोसोम्स कहते हैं. इज इट क्लियर? यस मैम. तो इस ये फोल्डिंग जो प्रोसीजर है उसको हम इन्वेजिनेशन बोलते हैं. इन्वेजिनेशन. नेक्स्ट वी विल सी अबाउट मोबिलिटी या मोटिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया. तो बैक्टीरियल सेल्स अगेन मतलब अलग अलग डिफरेंट तरीके होते हैं बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने. पहले मैंने बताया आपको ग्राम स्टेनिंग के बारे में, उससे पहले मैंने आपको बताया प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बारे में. ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं. उसमें से एक है बैक्टीरिया को डिवाइड करने का अगला तरीका है उसके मूवमेंट के हिसाब से. वो क्या वो मूव कर पा रहा है अकेले खुद ब खुद या नहीं. तो उसके हिसाब से बैक्टीरिया को आप डिवाइड कर सकते हो मोटाइल और नॉन मोटाइल. ठीक है. तो if it is motile, then they have something called as flagella. Okay, flagella या फिर होता है पेली या फिर fimbriae. Okay, so these are the structures that help in the movement of the bacteria. Okay, तो हम बस हल्के से ये फ्लैजेला कैसे होता है, क्या होता है वो देख लेते हैं. तो फ्लैजेला का जो है दे आर लाइक थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस फ्रॉम द सेल वॉल. ओके, सेल वॉल से होने वाले एक्सटेंशंस हैं जो कि थिन फिलामेंटस है. फिलामेंटस का मतलब है लाइक थ्रेड लाइक. ओके, तो फिलामेंटस है. दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बैक्टीरिया. सो बेस्ड ऑन द लाइक number of flagella present in the bacteria and the way they are arranged और दोनों चीजों के हिसाब से अलग अलग टाइप ऑफ फ्लैजेले होते हैं. ओके, द बेसिक 3 parts of flagella are, first one is filament, second one is hook and third one is basal body. ओके, तो क्या होता है कि ये आपका हो गया सेल वॉल. ओके, तो सेल वॉल के यहाँ पे एक होगा बेसल बॉडी, फिर उसको एक कनेक्ट करने वाले हुक जैसे चीज होगा. ओके, विच कनेक्ट्स बेसल बॉडी टू द फिलामेंटस स्ट्रक्चर. ठीक है. तो ये जो होता है ये जॉइंट पॉइंट होता है विच कनेक्ट्स फिलामेंट टू बेसल बॉडी. और बेसल बॉडी जो होता है दैट एक्ट्स एज अ मोटर दैट रोटेट्स द फ्लैजेलम. ओके, इज इट क्लियर? तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता है. हाँ, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे
you have the basal body. Okay, ये है आपका फ्लैजेलम. तो यहाँ पे एक बेसल बॉडी है और यहाँ पे आप देख सकते हो एक हुक जैसा चीज है. ओके, एक हुक जैसा चीज है और ये हो गया आपका फिलामेंट. तो ऐसे ही फ्लैजेलम के जैसे ही वी हैव पाइलस. ठीक है, और फिमरे. फिमरे जो होता है ये ओवर पूरे लाइक बॉडी पे होता है. फ्लैजेलम जो होता है एक लाइक इसके एंड्स में होते हैं फ्लैजेलम. एक यहाँ पे अभी इस बैक्टीरिया का अभी हमने एक ही दिखाया है फ्लैजेलम. कभी कभार यहाँ पे 2 हो सकता है, कभी कभार 3 होते हैं, कभी कभार 5 होते हैं. तो सब वेरी करता है. ओके, तो ये है आपका बेसल बॉडी, ये हुक है और ये है फिलामेंट. So together they form the flagellum and helps in the motion. So you can take notes. Bacterial cells can be motile or non-motile. Bacterial cells can be motile or non-motile. If motile, they have thin filamentous extension. If motile, they have thin filamentous extension from their cell wall called flagella. Okay, flagella shows a range in number and arrangement of flagella. They show a range in number and arrangement of flagella. And flagellum has 3 parts. First one is filament. Second one is hook, 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 which is the universal joint point. Okay, hook. And third one is basal body. So basal body acts as a motor that rotates the फ्लैजेलम. ओके, ये पेली और फिम्ब्री मैंने जो बताया, दे आर यूजुअली लाइक सेल सर्फेस स्ट्रक्चर्स आप कह सकते हो. बेसिकली ये मोटिलिटी में ज्यादा हेल्प नहीं करता है. दे हैव नो रोल इन मोटिलिटी. ओके, दे sometimes they just help in they help the bacteria in attaching to some rock or some host tissue. ओके, ये मतलब ज्यादा कुछ उनका उतना मोबिलिटी में उतना फंक्शन नहीं होता है. अटैचमेंट के लिए वगैरह यूज किया जाता है. ओके, सो नेक्स्ट वी विल वी हैव 10 मिनट्स. तो 10 मिनट्स में लेट्स डू वन थिंग. लेट्स रिकैप व्हाटएवर वी हैव लर्न टुडे. ओके, ये अभी प्रोकैरियोट्स को प्रोकैरियोटिक सेल खत्म करने के लिए वी हैव 2 more topics which we will cover tomorrow, और वो है राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी. तो अभी 10 मिनट बचे हैं. लेट्स रिवाइज व्हाटएवर वी हैव लर्न टुडे. चलो, who's going to unmute? Malaika. अच्छा, Malaika, you were not there in the beginning, right? Nayan, okay, आप बताओ. नहीं, आप भी शायद स्टार्टिंग में नहीं थे. Obipra, are you there? Yes, ma'am. Okay, Obipra. Tell me what are the 3 different parts of a cell. A mature cell will consist of what? Cell, protoplasm, and vacuole. Cell wall. Okay, cell wall, protoplasm, and vacuoles. Okay, and what does protoplasm consist of? Protoplasm consists of cytoplasm and nucleus. Okay, and can you tell me like what are the different parts of the cell? The cell is further divided into cell envelope and the protoplasm. Okay. Cell envelope is divided into cell wall and the plasma membrane. Yes, and correct. protoplasm is divided into cytoplasm and nucleus. Yeah. Again, cytoplasm is further divided into 3 parts, that is cytosol, organelles, and cell inclusion. Okay, and nucleus? Divided into nuclear membrane and nucleus. Okay, nuclear membrane and nucleoplasm, nucleolus, chromatin or DNA, RNA and protein. Okay. Yes, ma'am. उसके बाद what are the 3 different shapes of bacteria? And the bacillus, vibrio, and spirillum coccus. Coccus, correct. Bacillus कैसे होते हैं? Rod shape. Yes. And coccus? Spherical. Correct. And okay, what are plasmids? Nayan, I think you were there when I was discussing plasmid, right? Yes, ma'am. So what are plasmids? Sorry, ma'am. Can you repeat that again? Sorry? Can you repeat your question, ma'am, please? My question is, what are plasmid? What is a plasmid? PLASMID. Plasmid. Maybe it is a small. No, let Nayan answer the question. Sorry, ma'am. I don't know. Okay, ठीक है. Yes, Obipra, maybe I think you can continue. Maybe it is a small circular DNA. Correct. Which They are is small present in bacteria. Can you come again? It is yes, ma'am. हाँ, second point. आपका second point क्या था? Which is present in bacteria. Okay, cannot say spread in bacteria नहीं, cytoplasm. Okay, हाँ, so cytoplasm होता है. तो apart from जो हमारा genomic DNA होता है, genomic DNA जो होता है, main DNA जो होता है, उसके अलावा cell में plasmids होते हैं. These plasmids are small circular DNA. Okay, they are small circular DNA which give special characteristics to the cell. Okay,
उसके बाद हमने क्या सीखा? What did we learn after that? Do prokaryotic cells have? Malaika, are you there? Malaika, okay. Now you tell me. Do prokaryotes possess organelles? Nayan? Yes, ma'am, they possess organelles. Prokaryotic cells? Oh, no, sorry. They possess cell walls. I was confused, ma'am, sorry. नहीं, मैंने organelles के बारे में. What are organelles? Organelles they are just subcellular structures. Cellular structures. छोटे-छोटे structures होते हैं which are similar to organs in our बॉडी. ओके, ये सेल के अंदर होते हैं. अलग अलग टाइप के ऑर्गेनल्स होते हैं. जैसे मैंने बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया. ओके, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब ऑर्गेनल्स हैं. लेकिन हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसे कोई ऑर्गेनल्स नहीं होते. ओके, एक्सेप्ट वन विच इज ओबिप्रा, राइबोसोम. यस एग्जैक्टली, राइबोसोम्स. तो राइबोसोम्स के अलावा प्रोकैरियोटिक सेल्स में और कोई ऑर्गेनल्स नहीं है. सो अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट इज डू वी हैव? सेल इंक्लूजन्स. व्हाट आर सेल इंक्लूजन्स? दे आर reservoirs that store food material. Okay, so next who can tell me what cell envelope consists of? नहीं, ये तो बता दो. Yes, ma'am. Cell envelope, they are divided into three parts: glycocalyx, cell wall, and the plasma. Correct. And based on the staining procedure and differences in the cell wall, the cells can be divided into gram positive and gram negative. Okay, what does a gram positive mean? Gram positive, they take up gram stains. Correct. And gram negative, they do not take up gram stains. Okay, so if the glycocalyx is very tough and thick, what do you call it? Capsules. Correct. And if it is loose sheet? They're called slime layers. Exactly. Then what are mesosomes? Mesosomes, they are special membranous structures. Correct. That are formed as a result of inner folding. Inner folding. What do you call it? Inner folding? Invagination. 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 Invagination of the plasma membrane. Okay. So, like, what are the functions of these mesosomes? They help in DNA replication and they aid respiration, secretion process. Okay. Okay. And I guess the primary function is to increase the surface area. Okay. So they help in cell wall formation. Okay. Then they help in the DNA replication and distribution to daughter cell. मतलब डीएनए के मल्टीपल कॉपीज बनने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं. जब डॉटर सेल्स बन जाते हैं, पेरेंट सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बनते हैं, राइट. तो दो डॉटर सेल्स बनने के बाद उसमें ये हमारा डीएनए भी तो देना होगा, तो वो काम भी मीजोसोम करता है. मतलब ये मीजोसोम के अंदर इनको पैक करके दे रिलीज इट. Okay, they release it to daughter cells. So वो हो गया. Then other functions are like you said, respiration, secretion process, and increasing the surface area. So what is flagella? Obipra? It is a filamentous extension. Okay. What does it do? It will help in movement. Okay. And what are the three parts? What are the three parts of the flagella? I think motor and non-motor, man. Filament who can basal body. Filament जो होता है वो thread like structure होता है. Okay, ये जो thread like structure है वो है filament. Then you have the hoop which connects the filament to the basal body. And basal body का function क्या होता है? नायन? Yes, ma'am. जल्दी. हाँ. What is the function of basal body of the flagellum? Basal body, I don't know, ma'am. Basal body ये जो होता है वो propel करता है. It helps as it behaves like a motor that rotates the flagellum. इस पोर्शन को, फ्लैजेलम के इस पोर्शन को हम कहते हैं फिलामेंट. फिलामेंट को रोटेट करने के लिए, जब रोटेट होता है तब ये आगे बैक्टीरिया आगे बढ़ता है, राइट. तो वो रोटेट करने में basal body help कर. Okay, so apart from that we also learn pili and fimbriae, which they do not have much role in motility, but they can help the bacteria to attach to surfaces like rock and host cells. Okay, तो आज का क्लास हो चुका है, टाइम इज अप. तो हमने सीख लिया है, वी हैव समराइज्ड एवरीथिंग. तो कल हम राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडीज देखेंगे. देन आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू द यूकैरियोटिक सेल्स. ओके, एवरीथिंग इज क्लियर, राइट? किसी का कोई डाउट है? एवरीथिंग क्लियर? ओके, तो एक बार आप पूरा पढ़ के देख लीजिए और अगर कोई डाउट है तो कल के क्लास में हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो चलो ठीक है. तो आज का क्लास हो चुका है. बाय बाय, हैव अ गुड डे. Thank you, man. थैंक Thank you, ma'am. यू.